अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। कि फोर्स क्या है, इनर्शिया क्या है और मोमेंटम क्या है। आए टॉपिक की तरफ। मोमेंटम। सबसे पहले हम फोर्स की बात करते हैं कि फोर्स है क्या। फोर्स को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि फोर्स एक प्रॉपर्टी है, एक खसूसियत है। अगर किसी चीज़ पे अप्लाई कर लें तो उसकी स्टेटस, उसकी पोजीशन, उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो फोर्स इज़ अ property of a body, property when it is applied on a body, it causes change in its position, shape and structure. It is represented by F. Presented by F and its unit is Newton. In the same way, the second one is inertia. What is inertia? Inertia is a property of a body that resists any change in its shape, in its position and its structure due to external applied force. इनर्शिया वो खसूसियत है किसी बॉडी की, वो रेजिस्टिव फोर्स है जो एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करती है ताकि वो उसका शेप, उसका जगह और उसका पोजीशन चेंज ना करे। सो inertia is a property of a body any external force to change its position, shape and structure is known as inertia. The third one is momentum. What is momentum? Momentum is basically the cross product of mass and velocity. The cross product of mass and velocity is known as momentum. It is denoted by P. And mathematically it is given by rho is equal to m into v. मास एंड वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी का स्पेसिफिक मास हो और वो वेलोसिटी से किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो मास और वेलोसिटी के जो मजमूहे को मोमेंटम कहते हैं। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी
and its unit is kg meter per second. That's it all. Thank you for today. ये थी आज की वीडियो जिसमें 3 टॉपिक्स हमने पढ़े। फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम, उनके डेफिनेशंस पढ़ी, उनके स्ट्रक्चर, उनके मैथमेटिकल फॉर्म अगर है, और उनका यूनिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।